today's topic is redevelopment and self-redevelopment. Right? Redevelopment, we had many lectures, there are many things available. Now, self-redevelopment, people think it's a new concept, right? But it's not a new concept. If you go back to 1960s or 1970s, the people who were working in State Bank of India, Central Bank of India, Union Bank of India, in the lunch break, they used to discuss and they came together and they applied for a plot to be constructed for the residents. And the government gave the plot to them and they appointed an architect. They they took the approval from the corporations and then appointed a contractor and start constructing it. Then gradually it was taken over by the builders that uh, we will do everything. We will do the approval of the plans and everything. Now, what happened in the due course, the builders were not very fair. They started cutting the corners. They took undue advantage of the gullible home buyers who were ignorant and very innocent. So one thing where the cheating was there was, map mein hi paap hai, means they used to sell 1,000 square feet, say it is a super build-up area, but you actually used to get 500 carpet area. Then the quality of the construction and then the delay, right? So many projects still date. Even after the RERA has come, the RERA, if you put a Google search right now, it will show you that there are more than 5,750 stalled projects. It's a huge. Suppose if there are 50 flats, multiply by 50 into 5,000, how much it will come to? So that many families have put their money, either 50%, in some cases it is 100%, and people have taken loan, they are paying the EMIs, they are staying in a rented house, but the possession is far delayed. And all these stall projects, I have not seen a single stall project of the self-read, right? In redevelopment, what is the problem? First is there is no control on the quality. See, the buildings which were being constructed before 30 years to 40 years, now the government is saying you go for redevelopment because at that time, the quality of the RCC, the column, beam, and the slab, the RCC framework, the quality or the was not up to the mark, and gradually we have to make repairs. So every 5 years we have to go for the audit of our structural building and then find out what are the problems, and then you spend huge amount of money in crores to repair the building, and what you get is 5 years to 10 years of lifespan of that building. Now many buildings, gradually they come into C1 category. Our participants, I would like to, have a little interaction. So do you know what is C1 category? If you put it on the chat, so I will be able to, understand that how much engrossed you are and how much you know about it. So now, once the building is declared as a C1 category, there are three, four chats. Let me see. No idea, sir. Dilapidated building. No. Dilapidated beyond repair. Yes. Dinesh Rao, I really appreciate your answer that it is dilapidated building beyond repair. Now, once the building is declared as an C1 category, then you cannot stay in that building. The municipal authorities will come, cut your power supply, they will cut your water supply, and they will force you to vacate the building. If you don't want to go for redevelopment, then you have to do the repairs of that building staying outside, means you are paying for the maintenance of that building, strengthening of that building, and then you are staying on a rented house. So there is a two-sided sword on you. You pay the rent and pay and start paying for the repairs of the building. So this becomes unbearable and not feasible. So people go for redevelopment. Now I'll show you an interesting case of Goregaon Pulse Society. How many of you know about this case, Goregaon Pulse Society? Now, this is a very interesting case of Goregaon Pulse Society. If you search on the internet, you will find that, we all the judgments up to the High Court were in favor of the society. Now, I'll just give you the brief background of that society. There were around 60 members in that cooperative society. And
the building was very old, so they appointed a builder, and that society went for a redevelopment. Now, normally what happens that first the rehab component building is being created or constructed, and the 60 people who are staying in that existing building or existing members, they are given first the possession. The builder here was very smart, so what he did, he constructed one building, and the second building, which was the sale component building, he just constructed, the street parking area, and sold 30 flats of in the first building, which were supposed to be given possession to the existing member. And the project got stalled, and he had taken a lot of money from the sale component home buyers, and he was over trading, and he could not complete the project. And I remember since 2014 or 2015, he stopped paying rent to the existing members. So after 4 years, the society came together and they approached the High Court that the builder is not paying us the rent. So the builder was, pressurized, or and direction was given by Honorable Justice Kathawala. You have to pay the outstanding. So he gave a check of 5 crore rupees. But we advise the society members that don't encash these 5 crore rupees, keep it with you. And in the meantime, we had, asked to the court that he has to submit a per chart, bar chart, that by what timeline he will complete what work, and it should be recorded in the court. Builder submitted the bar chart, and unfortunately, that builder could not complete anything as per the bar chart. Even in fact, he did not lay a single brick. So what happened? We asked for the prayer that since he is not performing, agreement should be terminated. So now the agreement was terminated. There was one building which was constructed almost 95%. They had this 5 crore rupees, which did not they encash, and they put some money and they completed the building, and all the 60 members, existing members, went into the that building. They took the possession and they were staying there. And flat buyers, many of them went for the arbitration. The arbitration said no, once the builder has not performed and it is terminated, they cannot do anything. Now, what happens? Three members go to the NCDRs. They make society also a party and builder also a party. Now, the NCDRC says that since you are also a co-promoter, you had engaged the agent, that is the bidder, to construct the building and sell the building. So you are responsible and you have to refund the money to the home buyers with interest, that three home buyers. Now the society again went to the Supreme Court to challenge that order. The Supreme Court upheld the NCDRC order. No, the society also is a co-promoter and the society has to pay to the home buyers. Now, in such a scenario, in a redevelopment scenario, what happens if you also face the same thing? You think that builder ने हमको possession दे दिया, या हमने builder से as a society हमने builder से agreement terminate कर दिया, हमने हमारा building बना दिया हमारा, और हम रहने चले गए, अभी सेल कंपोनेंट ऐसा ही पड़ा है. Now, if this type of judgment comes, so the society and the members have to face the music, they have to face the brunt. So now, looking at the scenario, what I suggest is that we should go for self-redevelopment. So how many of you feel that self-redevelopment is a difficult task and it is not possible? Please put your comments on this. Litigation, labor, not difficult, difficult. Okay. How do after sale of flats, not difficult, it is difficult, possible but difficult because we do not know step-by-step process. Okay. So now I know what is your mindset. So it is not the step-by-step process. You have to engage a professional architect, or there is the DM model, development manager model, management model, where you appoint a person, he takes a certain percentage of the revenue generated, and he looks after everything, right from getting the plan approval to getting the construction and everything. And the things are not that difficult. Now, I got somewhere that it is the litigation. Tell me how many self-redevelopment buildings are in litigation.
So this is the one case of Daisar that it took 7 years. Too many issues, technical knowledge, then we don't have the expertise, funding. Yeah, that's a very good, intelligent question. The funding, not sure how many, but builders do lot of litigation. So in self-development, there is hardly any litigation because few members come together collectively. How you used to come in 1960s when you were working in some of the banks, you came together, applied for a plot of land to the Maharashtra government. Maharashtra government gave you a land, the name of the society, and then you appointed a architect, and then you appointed a contractor, and you started building it. Now, which this was taken away, and there are unscrupulous builders. I am not against the builders, but there are a few who, because of them, many people are, facing this problem. Now, the funding is, I understand, and knowledge, you can hire good people. Now, before going into self-redevelopment or a redevelopment, there you should have three things. First, the conveyance in favor of the society. Second, the property card should be in the name of the society, whether it is self-development or redevelopment. And third is the feasibility report. The feasibility report has to be, complete in detail, right from the origin, how the flat, how that plot was purchased, whom it belonged, and how the builder took it, and what were the plot area, dimensions, approved plan, and under which scheme that was passed. It has to be a complete essay from the date of construction of that building for the acquirement of the plot till date, and then it will give you a detail that what is your potential. Now, normally, what is I have learned from my experience, society members comes to me today. Also, I have 3 4 meetings of the societies. They say कि भाई देखो ये हमारे पास है, अब आप बताओ बिल्डर हमें क्या देगा. बोले आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया तो बोले नहीं. बोले वो हमको खर्चा नहीं करना है. फिजिबिलिटी रिपोर्ट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग, 25,000 rupees, 50,000 or 1 lakh depending upon the size of the plot and size of the members. बट वो 25,000 भी अगर हम 50,000 भी खर्चा करने को तैयार नहीं है, वो भी हम बिल्डर पे डाल देते हैं, तो बिल्डर जब खर्चा करेगा तो अपना प्रॉफिट रखेगा, अपना मार्जिन रखेगा और आपको हकीकत नहीं बताएगा. तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने से आपको ये पता चलेगा कि जब भी वो टाइम पे अगर 1 FSI थी, तो 1 FSI के अंदर बना हुआ है 0.9 0.8, या 1 FSI के ऊपर बना हुआ है, प्लॉट एरिया कितना है, हम हमारे बिल्डर ने क्या प्लान पास कराया और हमको हमको कितना दिया है. सो व्हाट इज वी हैव गॉट, व्हाट इज देयर इन द एग्रीमेंट एंड व्हाट इज इन द अप्रूवल प्लान, राइट. तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट से हमको ये जानकारी होगी कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आवर प्लॉट, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आवर सोसाइटी. बट बिफोर दैट, काइंडली, अभी तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का जो स्कीम था, एमडीसी स्कीम, वो जून तक भी एक्सटेंड हो गया है. तो आपने अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है तो टेक द एडवांटेज ऑफ द सेकेंड फेज. एंड अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है तो स्टैम्प ड्यूटी भर के आपका जो टाइटल है वो मार्केटेबल रखो आपके सोसाइटी का, क्योंकि इन केस इफ देयर इज एन अर्थक्वेक एंड द बिल्डिंग कोलैप्स, यू डोंट हैव द राइट टू कंस्ट्रक्ट. उसमें आपको 10 साल लग जाएंगे हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने में कि भाई ये प्लॉट सोसाइटी को बिलोंग करता था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन इट वाज नॉट ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द सोसाइटी. तो सबसे पहले कन्वेंस करो, आइदर गो थ्रू डीम कन्वेंस और गो थ्रू कंज्यूमर कोर्ट. और अगर सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाते हो और अगर तुम्हारा कन्वेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि जो बंदा सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाएगी जो सोसाइटी, उसको 1 महीने में हम डीम कन्वेंस करके दें. बट उसमें काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि अगर आपके समझो बड़ी सोसाइटी है 150 200 मेंबर की, वो टाइम पे 1978 82 में अगर उसने फ्लैट लिया है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, 5 रुपया 10 रुपए का स्टैम्प भरा हुआ है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि यू शुड गो टू द कंज्यूमर कोर्ट. अगर अर्जेंसी नहीं है तो आपको मोफा का पूरा जो एक्ट है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि the builder has to bear all the property taxes, all the outgoings till the plot is transferred in the name of the society. तो आप वो मोफा का सेक्शन का बेनिफिट लेके कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो और उससे कॉम्पनसेशन ले सकते हो. आपने जो टैक्सेस भरा है उसका भी आप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज द लैंड स्टिल बिलोंग्स टू इन द नेम ऑफ द बिल्डर और द लैंड ओनर ओरिजिनल. एंड as per मोफा, within 4 to 6 months he has to transfer the land
आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओसी और आफ्टर द सोसाइटी इज फॉर्म। तो ये सब चीज आपको जानकारी, आपको ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपना कन्वेंस सोसाइटी का, डिपेंडिंग अपॉन योर केस वेदर यू वांट टू गो फॉर डीम कन्वेंस और थ्रू कंज्यूमर कोर्ट, आप उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। दूसरा, जब कन्वेंस आ जाता है तो प्रॉपर्टी कार्ड में नाम आना सोसाइटी का जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। मुझे अगर बिडिंग प्रपोजल में मेरा प्लान अप्रूव करवाना है तो सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में देना हो चाहिए, तभी ही मेरा प्लान अपलोड होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी अगर आपकी सोसाइटी है और अगर आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में नहीं जाते हो और रीडेवलपमेंट में जाते हो थ्रू बिल्डर, तो जो भी प्रीमियम भरना है, टीडीआर भरना है, जो एडिशनल एफएसआई करना है, तो वो भी आपको जो है सोसाइटी के नाम पे पूरा रहना चाहिए फ्रॉम वन गो। नाउ ये तो हमें समझ में आ गई कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है रीडेवलप। अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट के हमारे को क्या बेनिफिट्स है, व्हाट आर द बेनिफिट्स? द फर्स्ट बेनिफिट इज, अगर हम मुंबई में हैं तो पहले 35% फंजिबल एफएसआई मिलती है फ्री ऑफ प्रीमियम। देन अगर हम सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाते हैं तो 10% एडिशनल एफएसआई मिलती है, दैट इज ऑल्सो फ्री। देन जो हमको प्रीमियम भरने का है, अभी एक मोटा मोटा आपको मैं बताऊं कि मैं मेरी सोसाइटी का मैंने निकाला, तो वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द प्रीमियम। उसमें प्रीमियम जो है मेरा आज की तारीख में 110 करोड़ का है। सो इट इज अराउंड 25 to 30%। लेकिन अभी बिकॉज इट इज इन बैंड्रा, तो उसका जो कंपोनेंट, जो सेल कंपोनेंट रहेगा, वो अगर मेरा 50,000 रुपये का कॉस्ट आएगा तो मेरा जो सेल होगा वहां पे 90,000 से 1 लाख रुपए तक। तो बट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरा पर स्क्वायर फीट जो आएगा वो अराउंड 50,000 रुपीज आएगा, विथ इंक्लूडिंग द प्रीमियम, including the 3 years rent, and including the hardship compensation and plus the corpus fund। तो अभी ये 50 करोड़ में से मेरे को जो करने का है वो कितना करने का है? 100 करोड़ फॉर पेइंग द प्रीमियम्स टू द कॉर्पोरेशन। अभी अगर मैं सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाता हूँ, फायदा क्या है कि मेरे को वो जो 100 करोड़ रुपया भरने का है प्रीमियम, वो प्रीमियम हो जाता है 50 करोड़ रुपया। और 50 करोड़ भी मुझे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भरना है। तो मुझे कितना भरना है? 10 करोड़। और मेरी जो सोसाइटी है वो 200 मेंबर की है। आप समझो, अगर आपकी सोसाइटी अगर बैंड्रा में नहीं है और कम मेंबर की है तो आपका प्रीमियम कितना कम हो जाएगा। प्लस मेरा जो रेंट है वो भी, जो अगर मैं 3 साल का पकड़ता हूँ तो मुझे 15-20 करोड़ रुपया इनिशियल जो फंडिंग चाहिए, इनिशियल फंडिंग इन बैंड्रा, it is only coming to around 20 crore rupees approximately, right? To get the IOD and CC and giving 3 years rent to my members. Now, मुझे वो 200 मेंबर्स के साथ, जो सोसाइटी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे अगर मुझे 50 से 60 फ्लैट अगर सेल कंपाउंडेड के बेचने को मिलते हैं, तो मुझे कितना चाहिए? इनिशियली मैं 5 से 10 फ्लैट, अगर वहां पे 90,000 का भाव चल रहा है, मैं 20%, 25% डिस्काउंट दूंगा कि भाई आप जो विद इन मेंबर्स है ऑफ द सोसाइटी, फर्स्ट 10 फ्लैट्स वी विल गिव यू एट द रेट ऑफ 70,000 पर स्क्वायर फीट और 65,000 पर स्क्वायर फीट। जो मेरा कॉस्टिंग से हार्डली मैं 25% फायदा रखता हूँ, वेर एज द बिल्डर विल कीप 100% प्रॉफिट। और 50,000 की जगह पे वो लाख रुपए पे बेचेगा। हम इनिशियल 10 फ्लैट जो है वो हमको कम भाव में बेचना है, एंड विद ट्रांसपेरेंसी कि भाई फर्स्ट चॉइस रहेंगे वो हमारे मेंबर के। अभी मेरे 200 सोसाइटी के मेंबर है, तो मुझे क्या 10 लोग मेरी सोसाइटी में से मेरी कमिटी को ट्रस्ट नहीं करेंगे? हु विल कम फॉरवर्ड एंड से यस वी आर रेडी टू परचेज इट एंड वी आर रेडी टू फंड। हम अपफ्रंट पूरा पैसा देंगे 10 फ्लैट का, या 50% देंगे, तो मेरा प्रॉब्लम उधर फंडिंग का उधर सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है आपके पास, तो देन यू कैन अप्रोच द बैंक। अभी तो गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर निकाला है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक शुड फंड द दिस थिंग, सेल्फ रीडेवलपमेंट सोसाइटीज, एंड दैट टू उसमें भी आपको 4% डिबेट रिबेट मिलेगा। अगर आपको 12% भरना पड़ता है तो 4% बैंक आपको वापस देगा, तो आपको जो लोन मिलता है वो 8%। अभी मैंने जैसा मेरी सोसाइटी का बोला कि 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इट्स इन बैंड्रा, तो सो बैंक इज गोइंग टू फंड मी 85 करोड़ टू 95 करोड़, 95%, 85 to 95%। तो मुझे क्या 400 करोड़ रुपया मुझे चाहिए लेने के लिए पूरे? नहीं, मुझे तो सिर्फ इनिशियल चाहिए
3 साल का भाड़ा मेरे मेंबर को देना है, आईओडी लेना है और मुझे प्रीमियम देना है। अगर मैं सेल्फ रिडेवलपमेंट में जा रहा हूँ तो वो भी मुझे इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, 5 इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो मैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर के मेरा काम चालू कर दूंगा, और जिस तरह से काम चालू होगा, लोकेशन इज गुड। अगर बिल्डर वहां पे 90,000 में बेचता है, मैं 80,000 में बेचूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, जो बिल्डर को कमाना है। क्योंकि बिल्डर को 100% प्रीमियम भरना है, उसको 10% एडिशनल एफएसआई नहीं मिलने वाली है, तो मेरा तो वो बच जाता है ना पैसा। तो मेरा कॉस्ट भी कम हो जाता है, एंड आई कैन अफोर्ड टू सेल इट ऑन अ लेसर प्राइस। मेरा स्टैम्प ड्यूटी पे भी बढ़ जाता है, 1,000 रुपया लगेगा मुझे। और अगर मैं समझो, हाउ इफ यू वांट टू कंपेयर सेल्फ डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट विद बिल्डर, तो रीडेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनेगा, तो उसमें लैंड कॉस्ट, जितने बिल्डिंग की कॉस्ट है, वो कॉस्ट के ऊपर बिल्डर को उतना स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। मुझे यहाँ पे तो कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है, तो वो भी मेरी बचत हो जाती है। 50% प्रीमियम भरना है, वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में, तो वो भी मेरी बचत हो जाती है। नाउ कमिंग टू दैट, उसके लिए आपके पास में 3 लोग अच्छे होने चाहिए। एक आपका लीगल कंसल्टेंट, एक आपका आर्किटेक्ट, और एक चार्टर्ड अकाउंट। ये 3 चीज अगर आपके पास में है, और आर्किटेक्ट के थ्रू एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो डिजाइन करेगा आरसीसी का, ये जो रॉड्स रहते हैं, जिसको हम रेइंफोर्समेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जो सरिया जिसको बोलते हैं हम हिंदी में यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, वो कितना का थिक रहेगा, 18 25 32 और उसकी भी स्पेसिफिकेशन रहती है, टाटा का रहेगा, और उसके ऊपर कोटिंग रहेगी, जिससे वो सड़िया जो है वो रस्ट नहीं पकड़ेगा। तो वो कोटिंग हमने लगा दिए, एंटी रस्ट कोटिंग लगा दिए उसके ऊपर। फिर जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, आजकल आरएमसी से बनते हैं, तो उसमें कितना परसेंटेज फ्लाई ऐश रहेगा, कितना परसेंटेज सीमेंट रहेगा, कितना परसेंटेज उसके अंदर वाटर रहता है, वाटर सीमेंट रेशियो जो मेंटेन करने का रहता है। और आरएमसी से वो जब वो कास्ट होगा, तो जो हमको, हमारी आज की जो बिल्डिंग है, वो स्ट्रेंथ थी उसकी M15 to M20, और आज की तारीख में विद आरएमसी वी गेट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट इज अप टू 45 to 50% ग्रेड का। तो ये सब अभी, बिफोर वी started the session, one of the member was discussing that she had purchased a new flat and they went to stay there, but the construction is not up to the mark, the quality is not good. So समझ लो कि अगर बिल्डर इतना पैसा बनाने के बाद में भी अगर क्वालिटी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे तो हर चीज, हर कंट्रोल आपके हाथ में है सेल्फ रिडेवलपमेंट में। तो फंडिंग का जो एस्पेक्ट है, उसमें दूसरा और एक है, वेयर वी कैन गो फॉर बार्टर सिस्टम। मेरे एक खुद के यूट्यूब चैनल में एक आया था, एमबीए था, ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन लाइन, बट ही टेक्स सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन बार्टर सिस्टम। वो अपना कॉस्टिंग दे देगा और बोलेगा कि मैं आपको ये फ्लैट बिल्डिंग पूरी बना के दूंगा, विथ लॉक एंड की चाहिए या आरसीसी चाहिए, आपको जैसा चाहिए, मैं इतने फ्लैट्स रखूंगा और दैट आई विल सेल इट टू द ओपन मार्केट। तो मैंने उसको पूछा, भाई तू इतना पैसा जब लेके आता है, तो व्हाई डोंट यू बिकम अ बिल्डर? तो बोलता है, नहीं, मेरे पास जो आरएमसी सप्लायर है, स्टील सप्लायर है और सीमेंट सप्लायर है, दे ऑल्सो वर्क विथ मी ऑन बार्टर सिस्टम। तो मुझे उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, मुझे तो सिर्फ खाली लेबर मैनेज करना पड़ता है। और वो लोग भी, जो अगर मेरे को 10 फ्लैट मिलते हैं, तो एक फ्लैट मैंने आरएमसी वाले को दे दिया, एक महीने सीमेंट वाले को दे दिया, एक महीने उसको दे दिया, जो आयरन सप्लाई करता है, रॉड सप्लाई करता है। तो मेरा इस तरह से एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द बार्टर सिस्टम, और मैं इस तरह से वो प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ। दूसरा है रेवेन्यू शेयरिंग। तो अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर भी आप करते हो, तो बिल्डर बोलेगा इतना रेवेन्यू आएगा, समझो 300 करोड़ का, तो मैं 200 करोड़ रुपया रखूंगा, और 100 करोड़ रुपया जो है वो सोसाइटी को रेवेन्यू शेयरिंग में दे दूंगा। और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेवेन्यू एज वेल एज शेयरिंग ऑफ द एरिया। आपको जिस तरह से चाहिए कॉम्बिनेशन, उस तरह से आप करके ये काम आपका पूरा कर सकते हो। और दूसरा जो है, मैं, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास में, तो उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक रिपेयर कमेटी बना दो। रिपेयर कमेटी में आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन वाला, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई एक बंदा तो मिल जाएगा, इधर ही इज एन आर्किटेक्ट और ही इज एन इंजीनियर, तो उसको ले लो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लो। एंड इन हाउस अगर कोई कंपनी में डायरेक्टर है या कोई एडवोकेट है, उसको ले लो। अपार्ट फ्रॉम कीपिंग वन एडवोकेट, वन आर्किटेक्ट, वन सीए आउटसाइड, पर तुम्हारी एक कमिटी के अंदर ये ले लो,
सो दैट यू नो कि भाई हम लोग को जो एडवाइस मिलती है वो आप उसको आपकी जो कमिटी है रीडेवलपमेंट की विच इज वर्किंग अंडर द मैनेजिंग कमिटी, दे कम टू नो दैट एंड दे कैन वेरीफाई दैट वॉट एवर द सजेशंस आर गिवन और वॉट एवर द स्कीम्स आर गिवन, उसके अंदर हमको जो है वो परफेक्ट एडवाइस मिली है, perfect legal opinion मिला है and we can go ahead. Now coming to the this thing कि आपको और अगर ट्रांसपेरेंसी लाना है तो you make one website आपकी बिल्डिंग का जिसका आप शेयरिंग करोगे आपके मेंबर्स के पास ही जो यूजर आईडी और पासवर्ड। तो अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी एक बिल्डिंग का हम लोग ने रीडेवलपमेंट किया तो वो हमको एलईडी लाइट्स लेने की थी, दैट वर कमिंग अराउंड 3000 एलईडी लाइट्स लेनी थी। तो हम लोग ने जो भाव निकाला था वो कुछ अराउंड 625 का निकाला था और वो हम लोग ने उस पे डाला कि भाई द सोसाइटी इज प्लानिंग टू परचेज एंड वी हैव गॉट दिस कोड। तो किसी ने बोला कि हम फिलिप्स का ले लेंगे, वो ये कोड में आएगा। फिर किसी ने कहा कि सिस्का की ही मिलेगी बिकॉज आई नो समबडी देयर इन द कंपनी एंड आई कैन गेट अ बेटर डिस्काउंट। तो जो 625 का था वो because of that person having a direct contact in the management of that सिस्का, वो लाइट हमको 550 में मिली। तो 75 रुपीज पर लाइट बच गया। 3000 से आप कैलकुलेट करो कितना हो गया, तो सोसाइटी का 2 लाख रुपया बच गया। तो वो वेबसाइट के अंदर भी व्हेन यू वांट टू टेक अ क्रिटिकल डिसीजन तो वो वोटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। दैट पर्सन विल बी देयर, वो अपना आधार कार्ड या जो भी आपने डिसाइड किया होगा ड्राइविंग लाइसेंस लेके वो लॉग इन करेगा और पर्टिकुलर कोई रेजोल्यूशन पास करने का तो वो थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन पास योर रेजोल्यूशंस एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड विद मोर ट्रांसपेरेंसी। यानी हर चीज आपको छोटी से छोटी, अगर आपको टाइल्स लगाने की है तो नीटको की भी आती है, आरएकी की भी आती है, गजरिया की भी आती है। आपने डाल दिया कि भाई ये 3 टाइल्स चॉइस करने की है और ये टाइल ये भाव में मिल रही है 60 रुपए में, ये 55 में मिल रही है और ये 65 में मिल रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर पीपल मेंबर्स चॉइस एंड द रेट। और कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि भाई ये 55 का था लेकिन तुमने ये तो 50 में मिलता है। अगर 50 में मिलता है तो आप उसका ये दे दो, हम 50 में खरीदेंगे। तो सोसाइटी का वहां पे ट्रांसपेरेंसी और जो कॉन्ट्रैक्ट देने की और डिसीजन लेने की सिस्टम है वो विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मीडिया यू कैन टेक इट एंड यू विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। और बिल्डर के ऊपर भरोसा करने से, हमारे मैनेजिंग कमेटी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, टी डेवलपमेंट कमेटी एक बनाओ उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो लोग का भी इंटरेस्ट वो सोसाइटी के अंदर है। तो और बिल्डर अगर रुक गया तो आप क्या कर सकते हो, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। यू हैव टू गो टू द कोर्ट। नाउ अभी 10 करोड़ के नीचे है तो सीटीसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, 10 करोड़ के ऊपर है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है बरोबर, यू कैन टर्मिनेट हिम, दूसरा अपॉइंट कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। और एक कमिटी आपको ये बनानी चाहिए दैट विल लुक आफ्टर ओनली द सेल ऑफ द फ्लैट। उनको पूरा नॉलेज रहेगा, या तो हम लोग पूरा ट्रेन कर देंगे कि अगर आपको सेल करना है तो कहाँ पे डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है, किस तरह से करना है। तो देर इज वन कमिटी हु विल लुकिंग आफ्टर। एक कमिटी जो है वो सिर्फ बीएमसी के प्लान्स अप्रूव होके कभी आते हैं कैसे आते हैं वो उसके ऊपर करेगा। सो अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो, 3 या 4 5 सब कमिटी बना देते हो और एवरी वन नोज देयर जॉब, तो मुझे नहीं लगता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट इज एन इम्पॉसिबल थिंग विद गेटिंग 10% एडिशनल एफएसआई, 50% ऑफ द प्रीमियम एंड गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स। और द प्राइवेटली हम एनबीएफसी से भी ले सकते हैं और थ्रू आवर मेंबर्स ऑल्सो हम फंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास समझो पैसा नहीं है तो आई कैन आस्क माई ब्रदर, आई कैन आस्क माई ब्रदर इन लॉ, आई कैन आस्क माई अंकल कि भाई ये बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, मार्केट प्राइस वहां पे 90,000 पर स्क्वायर फीट का है लेकिन फर्स्ट 10 फ्लैट्स को हम 70,000 में देंगे, तो आर यू इंटरेस्टेड। तो अगर उसके पास पैसा है और उस पर मेरे पे फेथ है तो बोलेगा यस, बीमानी करेगा तो गलत नहीं करेगा, तो आई एम रेडी टू पे फॉर 1 फ्लैट। और दूसरा, रेरा आने के बाद में आपको वो प्रोजेक्ट रेरा में भी रजिस्टर करना पड़ेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोफा कारपेट एंड रेरा कारपेट। तो वो आपको आपका आर्किटेक्ट समझा देगा। तो पहले आपको जो देखना है वो समझना है कि रीडेवलपमेंट वेदर थ्रू बिल्डर और थ्रू सेल्फ रीडेवलपमेंट, 3 चीज आपके पास रहना जरूरी है। दैट इज वन इज द कन्वेंस,
in the name of the society, second property card in the name of the society, and third is the feasibility report. Feasibility report through an independent architect. Don't go for the PMC. PMC will push only for the builder. Here, you approach an independent architect who will make a feasibility report, and then you can know what is your potential. So अगर redevelopment में भी जाना है तो instead of saying builder को कि builder हमें क्या देगा, हम builder को बोलेंगे भाई 500 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है, एक एक मेंबर का, हमको 500 की जगह पे 750 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए, और हमको इतना कॉर्पस फंड चाहिए, इतना रेंट चाहिए, और हम आपको जो है ये सेलेबल कंपोनेंट इतना कंस्ट्रक्ट करने देंगे। और उसके ऊपर अगर फ्यूचर में अगर देर आर सो मेनी पॉलिसीज, अगर देखो आप गवर्नमेंट आर कमिंग विद न्यू लॉट ऑफ पॉलिसीज, और पॉलिसीज के अंदर कुछ रिलैक्सेशन होता है, कुछ एडिशनल एफएसआई मिलती है, तो दैट विल बिलोंग टू द सोसाइटी एंड वी विल नेगोशिएट एट द टाइम कि उसमें से आपको कितना परसेंटेज देना है। या तो अभी से हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई 35% पूरा कंस्ट्रक्ट तू करेगा, समझो 20,000 स्क्वायर फीट मिलता है एडिशनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो 35% कितना हो गया, 7,000। तो 7,000 स्क्वायर फीट जो है तो सोसाइटी को देगा, एंड सोसाइटी विल कीप इट फॉर देमसेल्फ एंड सेल इट आउट। और 13,000 रुपीज जो स्क्वायर फीट है आप बना के मार्केट में बेच सकते हो। तो एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। सो यू डोंट लीव इट टू द बिल्डर के बिल्डर तुम हमें क्या देगा, हम बिल्डर को देंगे, वो लेगा। और दूसरा, सेल्फ रिडेवलपमेंट के बहुत से फायदे हैं कि आपके पास एरिया ज्यादा मिलती है, क्वालिटी कंट्रोल रहता है। अभी जैसे बहुत से मेंबर्स जो दिखाने में आता है, और जब फ्लैट के अंदर जाते हैं तो उसको पता चलता है कि भाई क्या है, और फिर देन दे डोंट वांट टू फाइट विद द बिल्डर। बड़ी मुश्किल से पोजीशन मिला है तो हम फाइट क्यों करें। तो एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। सो माय ओपिनियन and my recommendation is that you go for self-redevelopment, and if you need any help, then we are there to help you. Sir, I'm Aarti Agarwal Gupta of Shri Gitanjali Cooperative Housing Society, Warsaw. I have a question. Yeah, I can hear you. Sir, see, development agreement, what I understand, is signed by the managing committee at the time of redevelopment. Now, what is the commitment level for the managing committee that they signed the development agreement, and in future they can make settlement with the builder and they can sell the flats, as I have practically seen in my known people's cases where redevelopment has been stalled for 10 years after that because managing committee has walked away conveniently. So what is the measures to safeguard this thing? See, the first thing is you ask for the draft of the development agreement, and when this thing is passed in the resolution, that the development agreement has to be signed by each and every individual member. Normally, I do it that all the members, they sign the agreement. Okay. So can I, in continuation to this question, sir, builder क्या करता है, cumulative guarantee देता है society के ऊपर बनाने की, वो भी वो फेज वाइज निकलती जाती है सर। सो लेकिन जब मेरा इंडिविजुअल फ्लैट है जिसका मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रही हूँ, मैंने खुद से खरीदा है सर, तो मुझे इंडिविजुअल बैंक गारंटी मांगने का हक नहीं है ऑफ द प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ माय फ्लैट व्हिच इज गोइंग टू बी रीडेवलप्ड एज अ सिक्योरिटी सर? The provision is for 20% of the project cost, and that is being given to the society. Individual bank guarantee का कोई सवाल नहीं आता है, but IOD मिलने के बाद में, until and unless the builder doesn't sign the PAAA agreement, permanent alternate accommodation agreement, तब तक you are not supposed to vacate your flat. Suppose ये फ्लैट अभी जो आपका है वो 401 नंबर है आपका, राइट? जब रीडेवलपमेंट होगा तो वो 801 भी हो सकता है, 802 भी हो सकता है, 702 भी हो सकता है। तो until and unless that document is not there, and देखो नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये टाइम के अंदर पेनी वाइज और पाउंड फुलिश हो जाते हैं। वी डोंट अपॉइंट एनी लीगल एडवोकेट टू वेट आवर डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड PAAA एग्रीमेंट। हम ब्लाइंडली साइन कर देते। यू हैव द राइट टू टेक द ओपिनियन from your advocate, legal advisor, that these are the development agreement and this is the PAAA agreement. Kindly tell me what are the shortcomings, so I write to the society and I recommend the society to make necessary changes in the agreement, and then I'm ready to sign it. और आपको कभी भी यही नहीं जताना है society को that you are against the redevelopment. You have to say that I am in for the redevelopment. I am there 100%. But I want to protect the interest of myself also and other members also. In the interest of that, I am writing to it. Kindly make necessary changes. Thank you, sir.
So meanwhile, a participant is asking on the chat, can BMC tenants go into redevelopment? If so, what is the Yes, process? it is the same process. You will have to take the permission from the BMC. अगर माडा का प्लॉट है तो आपको माडा से परमिशन लेना पड़ेगा, एमसीजीएम का प्लॉट है तो एमसीजीएम से लेना पड़ेगा। इसलिए और एक बात बताना मैं भूल गया कि आज की तारीख में 33(9) एंड 33(11) जो स्कीम है टीसीपीआर की, they are being very popular because 33(9) is a cluster redevelopment जहाँ पे 5-6 बिल्डिंग साथ में आती है and then they go for a redevelopment, they get more concessions and more amenities. So if you get a chance of going in for cluster redevelopment, don't miss that chance. For loan proposal from banks for self-redevelopment, what percentage margin money is required? Nothing. Zero. 0 rupees is required. Sir, you stated about if more FSI is consumed in a project, is that permissible? See, it is now you are already occupying for the last 30, 40 years. Mm-hmm. So Right. how you can take the objection? It was not permissible. It is unauthorizedly been constructed. And at that time, it was possible. Okay. Okay. Second, sir, you stated deem conveyance within 1 month in case of self-redevelopment. Yes, that is the government policy. Oh, interesting. Okay. Okay. And if the title is not clear for the sake of if the stamp duty, etc. is paid, but the title of some of them, the probates are not done or whatever, those titles, does that affect the redevelopment? Conveyance? That has to be done. That has to be done. It will affect the conveyance also. Okay, it will affect the conveyance too. So I'll have to actually wait till the probate is completed and. But you can expedite that process. Yeah, but till that time, the conveyance won't be done. That's what you're saying, sir? Yeah. Okay. Okay, sir. Thank you. Sir, I want to ask, after this redevelopment is conducted, is there a separate title document to be executed with the new flat holders? And That's by what I told you. Before vacating your existing flat, you have to enter into PAAA, Permanent Alternate Accommodation Agreement. Okay, sir, that is the only title document we have to execute? That is the only, because that will give you that you in the newly constructed building, you will get a flat on the 7th floor of flat number so and so with so and so area. All right. And that also has to be registered. Okay, thank you so much. Hi, Dr. Bhimani, this is Shailesh out here. So Yeah. to check, you mentioned about funding is easily available with the bank. See, I work with a bank only. So the nationalized and commercial banks are actually not really lending on this space. So you just mentioned It is available with the cooperative banks as per the Maharashtra government circular. Mumbai Only the District Bank cooperative and bank. other cooperative banks. And you don't require that much fund. You require is only 5 to 10% of the project cost initially to kickstart. Once you start constructing, you'll get the booking. If your location is good, then from the amount which you will raise, you'll start getting the money. Or you sell initial 10 flats at a cost to cost basis or little 5-10% keeping in the profit and take the money and you can start it. See, nothing is difficult. Only thing is you have to think it out of box and come for the solution. No, absolutely. But the option of this, this entering into a kind of a development agreement with, like, say, the reputed corporates like L&T, Rustomji, now they are also entering this space. What do you think? Is that option also better than self-redevelopment, or the self-redevelopment is the best one? Self-redevelopment is the best one. Okay. Got it. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Sir, I'm Advocate Sahil Choksi here. My question to you is, what are the compliances and the papers required from the flat owners when they go for redevelopment? From the flat owners, Yes. the registered agreement, shell certificate, and there should be no loan on it. If there is a loan, then he has to declare to the bank as well as to the society that my loan is going on. Right, sir. And so anything else? Security of the document has to be supplied. I'm sorry? See, only he has to have the registered share deed, his name, and the share certificate. Rest all the documents has to be given by the society. All right. Understood, sir. Thank you, sir. So if there are disputes between flat owners, then whose responsibility is it to iron out the disputes? Maitri is asking on the chat. No, dispute with whom? Among Amongst the themselves. legal heirs or the dispute with the society and the member? Either or both, she's saying. That has to be sorted out. It depends upon what is the issue.
See, hypothetical questions I cannot answer. There has to be specific thing. And if it is specific, I'll have to look at the document and then give you the remedy what is available. Okay, sir. Yeah, Dr. Bhimani, Shailesh again. I agree with you what you just said, but I don't know. There's a misconception in many society committees that they should go with a builder, and I agree with you completely that that is not the best option because they take you really for a royal ride unless it is not a reputed name. So how do you really meaning I think there's an act which clearly specifies all the steps which was brought or which was introduced by the Maharashtra government in 2020. So where a proper process has been laid down, in terms of when, how, etc. So if majority of the members they agree, so then what do you do? Because some might be coerced, some might be influenced. So how do you really avoid such things? Because that is the possibility is huge on that side. No, then you have to build a rapport with other members, make them understand what is the benefit. And there are n number of things. You just type stall projects in Mumbai. You will get the list of stall projects. Even after coming RERA, there are stall projects. As per RERA, 4,400 stall projects are there. So understood. In self-redevelopment, I don't see any stall projects. And even after that also, you can give the Pal Society this judgment that is available on the Google also. Search for Pal Goregaon Society, and you will come to know that after society being in the High Court also, one member, the same component flat owner, 3 members, they went to the NCDRC and they told society to refund the money with interest. And even the Supreme Court has upheld that decision of the NCDRC. Then in that scenario, what happens? The liability will come on you, on the member. Right. See, you will have to do homework. You will have to do some homework. You cannot expect anything, out of the box to come out immediately. You will have to convince them that what if we are going to face this type of situations. And there are n number of blogs and articles written by myself and many other advocates that on the stall projects, how the builder, they do over trading or they take the money and they don't construct this thing. So there are many things available. Thank you much. Thank you very much, sir. So, Pati is asking on the chat, can AAA be executed by a nominee without the consent of the legal heirs? No. Okay. My question is that under 33.9 and 33.11, so what is the maximum benefit society will get in FSI? Yeah, I'll tell you. There is no 2 + 2 4 for this, right? It depends upon the location of your flat, of the plot. What is the width of the road? So 33.9 is you have to get 3-4 societies together. So that is a cluster development. For single building, you cannot go for a cluster development. So 4-5 societies coming together, then they can go for a cluster redevelopment. And 33.11 is the builder has constructed a permanent transit camp for the slum dwellers somewhere else, and he will transfer that FSI here, wherever the new construction is going on. So you will have to get hold of a good architect who can guide you while preparing the feasibility report and what is available, what is best available for you. One more question regarding that. At what stages the FSI means premium to the BMC we have to pay? After I am getting the IOD. I just want to ask that now what we are talking about is cooperative societies. But in Mumbai, practically we have many societies which are not societies basically, these are pagdi properties. So what is the remedy for these kind of properties? Can such pagdi tenants go for self-redevelopment? No, pagdi people cannot go for self-redevelopment. They have to depend on the landlord. They don't have any say in the redevelopment. Okay. This is And only in for case cooperative. Okay. And in case it is a landlord who is willing to go for self-redevelopment, can he use the same clauses which is applicable for cooperative societies, or there are separate rules or laws for that? No. See, there is a recent judgment of Gautam Patel, G.S. Patel, that in tenanted property, that pagdi system, the tenants don't have say in the redevelopment. The tenants do not have a say in the redevelopment of a tenanted pagdi system. Okay. But in case the landlord want to develop, the same he can develop. So that there is minimum. He has to give around 300 square feet of. Suppose if your unit is 180,
He will have to give you 300 square feet in the redevelopment. Right. And the rules and clauses are same as that of the cooperative societies, or they have separate No. rules? Cooperative society is different and tenanted is different. But the schemes remain the same. Okay. All right. Thank you The so much. DCPR remains the same. But you cannot say that you have to go for as per the cooperative society. Cooperative society is different and public system is different. But Okay. DCPR is same for both cooperative and the tenant. But tenants don't have any say. Like what we have a say in cooperative society, the same say is not available to the tenants. Okay. Thank you. Thank you so much. So the advantages, disadvantages of choosing a PMC versus architect? Initially, you don't have to go for the PMC. Okay. Choose an independent architect who will give you a feasibility report. Okay. After getting the feasibility report, then you decide whether you want to go for the PMC or you want to have a separate architect and separate advocate. That comes on later stage. Okay. Okay, sir. But first, appoint an independent architect and prepare a feasibility report. Then the next stage. Okay. Okay. Thank you, sir. Sir, I'm asking you one more question, sir. When you started your talk, you said try to avoid appoint an independent architect and an independent lawyer and all that. But the entire process of redevelopment is based on majority and GBM के resolutions. And यहाँ पे GBM जैसे हमारी सोसाइटी की GBM ये बोलती है कि हमें इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, हमें PMC चाहिए बिल्डर का, ताकि वो हमारी स्टैम्प ड्यूटी भरे और कन्वेंस लेके आए. सो ऐसी सिचुएशन में एज एन इंडिविजुअल में क्या करूँ सर? See, I'll give you one suggestion. आपका ओरिजिनल बिल्डर कौन है? सर बिल्डर तो अभी ला रहे हैं. एक्चुअली 7 एकर्स की जगह है. ओरिजिनल बिल्डर ऑफ योर एक्सिस्टिंग बिल्डिंग. वासवानी बिल्डर. आपने फ्लैट कितने में लिया था? सर मैंने लिया था 14 lakhs में 25 years ago. So you can file a consumer complaint against the builder and the society, quoting the MOFA section that it was your duty to transfer the land in the name of the society. So I'm filing a complaint, and whatever the taxes you have paid, that also you claim, and compensation also you. So we already got an order from the conveyance order from the consumer court without compensation. हाँ तो अगर ठीक अगर मिल गया है आपको विदाउट कॉम्पनसेशन तो अभी उसका कुछ नहीं कर सकता. अदरवाइज यू विल हैव टू चैलेंज दैट ऑर्डर. हाँ नहीं वो चैलेंज. तो अगर ऑर्डर आपको अगर ऑर्डर मिल गया है कन्वेंस का, तो फिर बिल्डर के पास कन्वेंस लाने की जरूरत ही नहीं है ना. हाँ सर वो तो यहाँ ऑलरेडी हैव द कन्वेंस. स्टैम्प ड्यूटी भरने की है ना, तो मेजोरिटी मेंबर्स क्या बोलते हैं, हम नहीं स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे. हम लोग ने जैसे पिछली बार नीव अपॉइंट किया था, नया बिल्डर अपॉइंट करेंगे, वो हमारी स्टैम्प ड्यूटी भरेगा और उसी का ही हम PMC रखेंगे. और क्योंकि मेजोरिटी पे सारा काम चलता है तो कहानी वहां अटक रही है सर मेरी और सोसाइटी में. और मेरा है कि जैसे मैं आप लोग की वेबिनार सुनती हूँ, मैं औरों की सुनती हूँ, आई अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि आपको इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट और लॉयर्स अपॉइंट करने चाहिए. सोसाइटी अड़ी हुई है कि हम तो बिल्डर का ही लॉयर रखेंगे, बिल्डर का ही PMC रखेंगे क्योंकि वो हमारी स्टैम्प ड्यूटी भरेगा. मेंबर्स इस पे अटके पड़े. स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरने की आ रही है? सर काफी मेंबर्स की है. 135 में से हार्डली किसी ने भरी है क्योंकि तो सब. आपको कन्वेंस का ऑर्डर कैसा मिल गया? सर कन्वेंस का ऑर्डर मिला है, कन्वेंस नहीं मिली है. कन्वेंस ऑर्डर मिला है कि अब आप स्टैम्प ड्यूटी भरिए तो आपको कन्वेंस डीड मिलेगी. नो तो आपका ये कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू नहीं गया हुआ है तो फिर उसका नहीं सर कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू गया हुआ है. एडवोकेट उदय वावेकर जी लेके आए ऑर्डर. वो हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है. you have the best person in your this thing. वो तो थक गए सबको बोल बोल के कि स्टैम्प ड्यूटी भरो, उनको भी नहीं सुन रहे कोई. वो ऑर्डर विदाउट कॉम्पनसेशन आया लेकिन उनका भी कोई नहीं सुन रहे सोसाइटी में, क्योंकि मेजोरिटी पे डिसीजंस हो रहे हैं सर. तो उसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते ना. तो फिर वही तो मैं अगर जो आदमी सोया हुआ है उसको मैं जगा सकता हूँ, सर उसके चक्कर में मैं जो आदमी जो जागा हुआ है और वो सोने का ड्रामा करता है उसको मैं नहीं जगा सकता. सर उस चक्कर में मैं डूब रही हूँ, मेरा इंडिविजुअल फ्लैट डूब रहा है, तो मेरे क्या राइट्स है मैं वो समझना चाह रही हूँ. मेरी सारी माथाफोड़ी उसमें ही चल रही है. आई एम जस्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सेव माई फ्लैट बिकॉज आई एम डीलिंग विद पीपल हु आर वेरी लालची. तो क्या करना चाहिए सर, आप प्लीज बताइए. See that this is an individual case which I'll have to show me all your documents and then I can. Done sir. Thank you sir. So any closing remarks? No, if anyone asks me here which is the most recommended and beneficial proposal for redevelopment, I would say that go for self-redevelopment instead of appointing a builder. That's it.
Okay, sir. Thank you so much for sharing so many inputs today. And also, can't thank you enough for always sharing your expertise and your experiences with us on our platform. Thank you so much, sir. Okay, bye.